Hi everyone. So we come to the next topic of staffing, that is the methods of training. We have done staffing has three aspects. The first aspect is of recruitment, second is selection, third is training. Then we did the concept of training along with education and development, and now we are going to talk about the different methods of training. So there are two methods of training: on the job and off the job. Now, on the job means while performing the job, you get trained. It refers to the methods that are applied to the workplace while the employee is actually working. So, while you're working, when you get training, it is known as what? Nothing else but on the job training. Whereas off the job training, what does it mean? When you're away from the work and you get trained for something. It refers to the method used away from the workplace. Now, this is learning while doing, this is learning बिफोर डूइंग. आप जब कुछ चीज़ कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं उससे पहले अगर आप कुछ चीज़ लर्न करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब का वेस्टिबल ट्रेनिंग. यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने एक एक एग्जांपल इसलिए दिया है कि थोड़े ये ईजी एग्जांपल्स हैं. जैसे हमारे घर में प्लम्बर्स और इलेक्ट्रीशियंस आते हैं ना, उनके साथ एक छोटू आता है. सो ये वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर आता है. जब हम बात करते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग की, तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है? जब कोई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है उसको हम जब उस पर पहले ट्रायल लेते हैं, ट्रायल लेने के बाद फिर उसके ऊपर एक्चुअल वर्क फ्लोर में जाकर काम करते हैं, तो वो जो ट्रायल लेना होता है वो वेस्टिबल ट्रेनिंग होता है. सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में क्या फ़र्क है. लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सबसे पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. लाइक आई टोल्ड यू, आपके घर में प्लम्बर आता है, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई भी आता है, उसके साथ एक मास्टर ट्रेनर होता है और एक उसका ट्रेनी होता है. वो छोटू होता है जिसको वो बोलता है छोटू ये चीज़ पकड़ाना, जैसे कुछ भी हो गया, प्लास पकड़ाना, छोटू पेचकस पकड़ाना, ऐसा करके बोलता है ना वो. सो व्हेन ही आस्क फॉर ऑल दीज थिंग्स, वो किससे मांग रहा है? छोटू से. वो छोटू एक्चुअली में उसका सर्वेंट नहीं है, वो कौन है? ट्रेनी, जो उसको ऑब्जर्व करता है. किसको? द मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व करता है. ऑब्जर्व करते करते ट्रेनिंग लेता है. ट्रेनिंग लेने के बाद उसी तरह का काम करता है. आप देखेंगे कि इनिशियली 1 ईयर में अगर आप सेम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो पहले वो छोटू की तरह काम करता है, फिर छोटू जो होता है वो मास्टर ट्रेनर बन जाता है और वो किसी और छोटू को लेकर आता है. सो द चेन गोज ऑन. दिस इज व्हाट इज नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. The master worker trains the trainee. Once trainee becomes the expert, master worker goes, he becomes the observer, और जो trainee है वो वो एक एक्चुअली मेजर वर्कर बन जाता है और फिर वो लोगों को ट्रेन करता है. तो इसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. आइए इसको पढ़ते हैं. Put the trainee under the guidance of master worker. These are designed to acquire higher level of skill. So सबसे पहले हम किसके अंडर काम करते हैं? मास्टर वर्कर के अंडर. Designed to acquire what kind of skill? Higher level of skill. Usually is from 2 to 5 years depending on the kind of work you are doing. Like even if for the plumber's job, or if you're talking about a electrician's job, so it takes good time to learn the perfection. So it is 2 to 5 years of training because these apprenticeship trainers, they start at a very early age. Young age में start करते तो by the time they really become expert, it takes them 2 to 3 years to 5 years. People seeking to enter skill jobs are often required to undergo this training. So जहाँ पर skill jobs होते हैं, हम यहाँ पर आ गए skill jobs पे. These apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer. So they spend time with experienced guide or trainer. What do they spend? These apprenticeship time. Here is the word time. Now uniform period of training is offered to trainees. So this period varies from, here I have written out here uniform period. It may vary from 2 to 3 years. कभी कभी टाइम कम भी लग सकता है, बट यूजुअली बहुत यंग, एट द एज ऑफ 16 दे स्टार्ट, तो बाय द एज ऑफ 20 या 19 दे बिकम द परफेक्ट मास्टर ट्रेनर, लिटरली. ऑलराइट. देन हियर बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स आर केप्ट टुगेदर. सबको इकट्ठे रखा जाता है क्योंकि छोटू के काम करने के तरीके पर पता लगता है कि वो भाई स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, और उसी के ऊपर उसका टेन्योर डिपेंड करता है. स्लो लर्नर्स में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग. तो हम यहाँ पर दोनों के दोनों फास्ट और स्लो लर्नर्स को रखते हैं, और जो स्लो लर्नर्स हैं उनको मे बी 5 ईयर्स लग जाते हैं, और जो फास्ट लर्नर हैं वो 2 to 3 ईयर्स में सीख सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स आर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स. Suitability where detailed practice is needed, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. where high level of skill needed, higher level of skill, ये इसकी suitability है. इसके ऊपर आपका बोर्ड का क्वेश्चन आता है. एडवांटेज क्या है? स्टाइपेंड इज गिवन टू द ट्रेनीज. ऑफकोर्स कोई भी ट्रेनी फ्री के लिए काम नहीं करेगा, तो थोड़ी सी जेब खर्ची दी जाती है उसके लिए. ट्रेनीज लर्न हाई लेवल ऑफ स्किल, ये भी एक एडवांटेज है, हाई लेवल ऑफ स्किल आ जाती है. डिसएडवांटेज, ट्रेनीज
Oh, training is for very very long time. 2 साल तो है ही है ना minimum, चाहे जो मर्जी आया हो जाए. So it is for a very long time and comparatively expensive method. Why? Because आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी को भी पैसे दे रहे हैं, स्टाइपेंड ऑल्सो, जेब खर्ची ऑल्सो, तो आपके जेब से पैसा तो जा ही रहा है ना. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और ऐसे आप एक छोटू को ट्रेन नहीं करते, बड़े सारे छोटूस को अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग वर्क स्टेशन पे ट्रेन करते हैं. So that becomes a comparatively expensive method. Alright, next point we start is with coaching. What do we understand by coaching? Like, you have your sport coaches, you have your career counseling coaches, you have your teachers where you go for coaching. So there are mutually set up goals, both the trainer and the trainee decide. They decide the goals and then they work towards the achievement of goals. So there are mutually agreed upon targets which are to be achieved under coaching. In this method, superior guides and instructs the trainee as a coach. Like I told you, you have your coaches. So if you talk about like your sports coach, your football coach, your maybe basketball coach, or your even cricket coach, they do what? The superior guides and instructs the trainee as a coach. The coach or counselor sets mutually agreed upon goals. Here you have mutually agreed upon goals. Suggests how to achieve these goals. So, periodical training is required for this purpose. So, he suggests how to achieve these goals. Periodically reviews the trainees' progress and suggests changes. Whatever changes are required, that is suggested by the coach. He tells you what changes are required in behavior or performance, both. So, when you talk about in terms of behavior or performance, the kind of coaching you are taking, according to that. The trainee works directly with the senior manager. Now, here we are talking about the organization. So, the coach who is guiding you is your senior manager. The manager takes full responsibility for the trainee coaching. He coaches him according to the requirement of the organization. The trainee is being groomed to replace the senior manager and relieve him from some of his duties. What happens is, you must have heard of the concept of delegation. So sometimes when the superior does all work and he is unable to share his work, he becomes overburdened. So what he does is, he shares his work by giving some responsibility to the subordinate. That giving responsibility is also kind of giving training to the subordinate, that in case the senior manager is not there, how he can take his place and how can he manage the particular work. This gives a chance for training to learn the job also. Job as well as new skills, that's more important. Example, sports coach, career coach, business coaches. So these are the different types of people. The entrepreneurs are business coaches who coach about how to actually set upon the goals and how to achieve the business targets. So these are the things how people work. Advantages, it improves performance, helps to develop the hidden potential. Yes, of course, yes. So what happens is, once you are coaching somebody, it helps to improve your performance. How it improves your performance? Because you're already being trained at some work. So whatever you're trying to work on, it becomes better day by day. Your skill and knowledge get enhanced, helps to develop the hidden potential, and whatever you had not thought of, when the superior gives you to work on that, and when you actually start working on it, you come to know that, oh, I had this quality also, my hidden potential has been tapped by the superior. Alright, next we start is with internship training. What is internship? To bridge the gap between theory and practical. This kind of training is provided to the students studying in a particular educational institute. Once their education finishes off, they go and take practical training in that particular industry. There's a tie-up between the educational institute and the industry or the business place, and the people get the students actually get the practical hold of the things which are to be done in the organization. Now, when we talk about internship training, what the best thing happens is that these freshers, when they go for training program, they get a small jeb kharchi like the apprenticeship people used to get. These people also get stipend, and when they get stipend, they feel happy, as well as they get the training on actual working in a particular place without having any experience. That exposure is very, very important. What benefits the organization? They get people with fresh ideas, and these people who join the organization, they comparatively take less you can say salary, because they get only stipend, so they take less salary and actually work more. It may not be very advantageous to the particular trainee, but then it does give him an exposure to work, to know the actual work environment in a particular organization or industry. It is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate.
What they do is, how do they cooperate? Selected candidates carry on regular studies for a prescribed period. They study for some time. They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skills. It is not a service contract, not at all. Only stipend is given. छोटी सी जेब खर्ची, stipend is जेब खर्चा. हाँ. The student gets the chance to practice under real work situations. Now, examples are CAs, doctors. Nowadays, even industrial training is given to the people who are doing their MBAs. So, I just forgot to write out here people doing MBAs. This is also another out here. Then advantages, what do we get as an advantage? A stipend is provided, which is gap between theory and practical, helpful to trainee and institution both. Why? Trainee gets exposure to work in a, to know the industrial environment, and institute gets a person who works for them at a lesser cost. Now, trainee may not get suitable institution. Disadvantage is that he never wanted to work in a particular institution, but he has to go for an internship program, which is compulsory, mandatory. So, he may not be very happy there, but then he works there. And sometimes, you know, there is this advantage also that sometimes trainee get, the industry gets so impressed with the trainee that they keep him for a permanent contract also for later on. So, it depends upon the kind of work situation. Stipend at time given is less and work extracted is more. Yes, that is one of the major disadvantage. Alright, next we will do is job rotation and induction training. Okay, the next type of on-the-job training is job rotation. Job rotation and transfer is almost similar. What you do is you shift the employee from one job position to another. This is to train him on various types of job or skills, so that he knows that what is he most suitable for. Sometimes this type of training is given to the people so that we may know their potential and they may also know where they are best suited. Right. This kind of training involves shifting the trainee from one department to another or from one job to another. This is your definition. This enables the trainee to gain a broader understanding of all parts of the business and how the organization as a whole functions. So, when you talk about the complete organization, he'll be able to understand the various departments, how they're working. Of course, if he is trained enough or he has already got knowledge in particular kind of department, so he gains knowledge in the another department also. That is also a possibility. The trainee gets fully involved in the department operations. Like I told you, the trainee gets a chance to test their own aptitude and ability, where they are best suited. So, they come to know where they are best suited. They are best suited. Okay, right. Job rotation allows trainee to interact with others. Of course, yes, when you interact with lot many people or different departments, you get into a comfort zone also rather, and also it becomes easier for you to adapt to the working of the organization. So, with other employees, facilitating future cooperation amongst departments. Yes, departmentalization जो है वो जो department wise working जो है वो easier हो जाती है. When employees are trained by this method, the organization finds easier at the time of promotion, replacement or transfer. Like I told you, it's very easy. अब इसका फ़ायदा क्या है? What are the advantages of giving job rotation training? Now, the advantages, it removes boredom. People don't get bored because they're working on different type of job profiles. Helps to identify when trainee works best. Where, actually not when, where trainee works best. जहाँ पर वो अच्छी तरह से काम करता है. Like I told you, if he is best suited, he comes to know about his own ability and he is able to perform the best job. Disadvantage, it can be costly because you're training the employee into various places. Sometimes he may, in particular department, he may not give the work as per his potential, and performance may go down. It may affect your profitability, and moreover, you are still paying the person. So, it becomes a costlier affair, and it is sometimes time consuming because the person is not taking one particular place and working from one place to another, one department to another. Shifting becomes a little difficult task. Both the trainee as well as the organization may not benefit out of it. नेक्स्ट वी कम टू इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग अगर आपको याद हो, हमने पहले किया हुआ है. फैमिलराइजेशन, ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग एक ही बात होती है. जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, उसको जॉब प्रोफाइल समझाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं. तो इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल करना. राइट, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन क्विकली और इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब बाय बिकमिंग familiar with the surroundings, job and business. तो वो किस चीज़ के साथ familiar हो जाता है? Surroundings, job and business.
The duration is few hours and days, depend on the kind of organization. Like I'm working in a school, so when teachers come to the organization, they just get acquainted with everything within few hours. It doesn't take them days. But in some particular kind of an organization, it may take few days to understand the working of that particular place. Its main objective is to help new employee reach the level of performance expected like that of an experienced employee. हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ नया बंदा ज्वाइन कर रहा है वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की तरह काम करे, अननेसेसरीली हैपहेजेडली काम ना करे. इट इज़ टू अकोमोडेट न्यू एम्प्लॉयज़ इन न्यू एनवायरनमेंट. लाइक यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, बट बेसिकली मतलब वही है कि नए एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट कराने के लिए. एडवांटेजेस हेल्प्स न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ टू सेटल डाउन इनटू न्यू रोल. बहुत ईजी हो जाता है, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट. ऑफ कोर्स इंडक्शन ट्रेनिंग से ये होता है कि लोग कई बार दे गिव द प्ली, सर हम ये काम नहीं कर पाए, हमें पता नहीं ना, हम नए हैं ऑर्गेनाइजेशन में. हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है प्ली देने की, हम आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम पहले ही बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं. इन आवर स्कूल वी हैव एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम व्हेनेवर देयर इज अ न्यू सेशन इट begins and we have new teachers or new recruits in the organization, then an induction training is given to them along with all the teachers, all the teaching fraternity. सब लोगों को एक नए सिरे से फिर से दी जाती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, जिसमें अगेन ऑल रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग इज डिस्कस्ड and a kind of 2 days training program is given once when the new session begins, once after the summer vacations get over and the new after the summer break we start with our school. So this kind of training actually helps you to accommodate into the new environment if you are new to the organization, and the पुराने वालों को याद आ जाता है कि भैया हमने ऐसे काम करना है, right? Disadvantage, it increases cost. कई बारी हाँ ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और लोग एडजस्ट नहीं कर पाते. कई बार क्या होता है, मैनेजर अवेलेबल नहीं होता, तो आपको कई बार रिसोर्स पर्सन बाहर से लाने पड़ते हैं समझाने के लिए. कई बार लोग एडजस्ट नहीं करते ना, बार बार बॉस एक ही बात बोलता है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई नया बंदा आए नई तरीके से समझाए, तो वो भी एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है. एंड समटाइम्स द मैनेजर मे नॉट बी अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग द ट्रेनिंग पार्ट. सो दोनों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए. दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट वी कम टू दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में वेस्टिबल ट्रेनिंग है जो मेजर मेथड है. उसके अलावा देर आर वेरियस मेथड्स बट दे आर नॉट टू बी डन फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, दो दे हैव बीन गिवन इन NCERT. So I'll be giving you the names of those other methods of training, but we'll be just concentrating on vestibule training. Alright, next we are doing off the job training method. We're starting with vestibule training. Now what is vestibule training? I'll just explain it to you out here. What do we have is there's this actual work floor. जहाँ पर आप काम कर रहे हो ये आपका actual work floor है, ठीक है. इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, ये आपका actual work floor है, ठीक है. अब क्या है, यहाँ से एक्चुअली इसे क्यों वेस्टिबल ट्रेनिंग कहा जाता था, और ये आपका जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेते थे, ठीक है. यहाँ पर आपके डमी मॉडल पड़े होते हैं, राइट. देर आर डमी मॉडल्स आउट हियर एंड व्हाट यू डू इज यू गेट ट्रेन्ड आउट हियर एंड देन यू गो टू द एक्चुअल वर्क फ्लोर एंड देन यू वर्क. सो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जब आप पास ऑन होके जाते थे ना, इसको वेस्टिबल ट्रेनिंग कहा जाता था. दिस इज व्हाट वेस्टिबल ट्रेनिंग मीन्स. तो क्या, इट इज़ एन ऑफ द जॉब. जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे अलग जगह पे आप ट्रेनिंग लेते हैं ऑफ द जॉब. यहाँ पर आप क्या करते हैं, डमी मॉडल पे या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम करते हैं और उसके बाद उसी चीज़ को अपनी एक्चुअल मशीनरी पे ट्राई करते हैं. ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए. उस मिस्टेक से मशीनरी भी ख़राब हो सकती है और आप एक्सीडेंट प्रोन भी है वो जगह, तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो वाई अननेसेसरीली इंक्रीज द कॉस्ट. तो बेटर इज़ कि आपको हम एक तरह का अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर job training experience देते हैं, that how do you have to work on the actual workflow. It is an off the job method of training. In this method employees learn their job on the equipment they will be using, ठीक है. So the actual क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, actual work environment is created in a classroom and employees use the same material and equipment. Same material and equipment use करते हैं. It is used when sophisticated modern and delicate machineries are involved. Same thing. The employees avoid using on the job methods of training. फिर नहीं हम करते तो off the job use करते हैं. A dummy model of machinery is prepared and instead of using original machinery employees are trained on the dummy model. Alright. Training is conducted away from the actual work floor. This is what I showed you. So ये training जगह है, ये actual work floor है. Training is provided by experts. Many people can be trained at the same time. बहुत सारे लोग इकट्ठे ट्रेनिंग देते हैं बिकॉज सब पूरा फ्लोर होता है एक जहाँ पर इकट्ठे वर्क करा जाता है. डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ कॉस्टली मेथड या बिकॉज आपको सेम सेटअप करना पड़ता है, एक डमी मॉडल भी लेकर आना पड़ता है. डमी मॉडल में नॉट बी सेम एज रियल मशीन, सो डिफिकल्टी इन रियल वर्किंग. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डमी मॉडल बिल्कुल सेम नहीं होता और आप जब रियल वर्क एनवायरनमेंट में जाते हो तो इट डजंट कम आउट इन द सेम मैनर.
ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग में आपके सिलेबस में सिर्फ ये यानी कि वेस्टिबल ट्रेनिंग आता है। अदर मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है क्लासरूम लेक्चर्स, इसमें आती हैं फिल्म्स, इसमें आती है केस स्टडी, इसमें आती है कंप्यूटर मॉडलिंग और इसमें आती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या हम जब कंप्यूटर मॉडलिंग की या केस स्टडी की, फिल्म्स की, क्लासरूम लेक्चर्स की, ये जनरल है। जैसे क्लासरूम में आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, फिल्म्स का यहाँ पर मतलब है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, केस स्टडीज़ जैसे आप अपने बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ करते हैं ऐसे केस स्टडीज़ जाती है और उसमें आपस में सोल्यूशन मांगा जाता है। कंप्यूटर का एक मॉडल बना दिया जाता है जैसे आप गेमिंग में यूज़ करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आप अपने फ़ोन में रोज़ कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो जैसे आप उसको फॉलो करते हैं वैसे ही आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। सो दिस इज बेसिकली नॉट इन योर सिलेबस। तो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड विद वेस्टिबल ट्रेनिंग। सो आई होप you follow the chapter. Next we'll do is synopsis video. Till then, bye bye.